जी, होपफुली सब ठीक होंगे। ये जो अभी ये जो नैब का जो पोस्ट अरेस्ट बेल वाला मसला हुआ, जिससे बाकी नकवी ने जो पोस्ट अरेस्ट बेल शहबाज शरीफ साहब को, जो हमारे फॉर्मर सीएम हैं, उनको दी थी 22/4/2021 को, जिसकी बेसिस पे उन्होंने बाहर जो है वो गए थे और फिर पहले बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया था, रेफरी बेंच ऊपर अपॉइंट किया, जैसे आलिया नीलम, बाकिर अली नजफी और दीगर के 3 लोगों का बेंच था। तो उसकी जो है ये जजमेंट जो है, जो अप्रूव्ड है फॉर रिपोर्टिंग, ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्सेस नैब पोस्ट अरेस्ट बेल का जो मामला है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ जो है वो आपकी नज़ायर आए हैं और कुछ चीज़ें इसमें बीच में ऐड हुई हुई हैं जो हमारे लिए बेनामी ट्रांजैक्शंस के स्पेशली जो केसेस करते हैं और नैब लॉ को जो स्टडी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हाथ ही लगी है हाई कोर्ट की वेबसाइट से, तो लेट्स हैव अ लुक एट इट। रिट पिटिशन नंबर 20793/2021 मियां मोहम्मद शहबाज 22/4/21 को है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मोहम्मद अमजद परवेज़ हैं जो नून लीग के, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा मोहसिन अब्बास, मोहम्मद नवाज़ चौधरी, ज़ाहिर अब्बास, खावर इकराम साहब इसमें पेश होते रहे हैं। दीगर इसमें नईम तारिक संगेरा साहब भी पेश हुए हैं। और इसमें इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि दिस फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रूल 5 चैप्टर 4। इसमें हमने 2-3 जो सवाल इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि उसमें वो सवाल कौन से इंपॉर्टेंट और किन सवाल के जवाब इसमें हमें मिलेंगे जस्ट फॉर आवर एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन। एक तो ये कि जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था बेंच और जो रेफरी बेंच अपॉइंट हुआ था, वो किस शिक के कानून की किस शिक के तहत हुआ था, उसका आंसर इसमें बड़ा वाज़ेह मिल जाएगा। और उसके अलावा जो इसमें डिफरेंट साइटेशंस नज़ायर हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होता है, प्रॉपर्टीज़ का कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के एलिगेशन है, तमाम की एक समरी टाइप आपके सामने पेश हो जाएगी अगर इसको पढ़ लें। दिस फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रूल 5 Chapter 4, Part H of the High Court Rules and Orders, Volume 5, has read with Section 378 of Code of Criminal Procedure by the Honorable Chief Justice as referee judges after when the Justice Sardar Mohammad Safaz and Justice Ajaz Javed Goral could not reach on consensus in the matter of grant of post-arrest bail. पोस्ट बेसिकली आपको पता है कि नैब की जो है वो 2 जज बेंच सुनता है, तो वो नहीं पहुंच सके, तो ग्रांट बाय पोस्ट बाय द अदर मेंबर रिफ्यूज्ड। Rule 5 of Chapter 4, Part H of the High Court Rules and Order, Volume 5 of the Section 378 of Code of Criminal Procedure 1860 are reproduced as। ये बता रहे हैं कि रूल 5 चैप्टर 4 का किस, ये बड़े सीनियर वकला से मैंने सवाल पूछा, उनको नहीं पता था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच इन केस ऑफ डिसअप्रूवल या डिसएग्रीमेंट बिटवीन द 2 मेंबर्स ऑफ द बेंच कहाँ से हम उठाते हैं और कहाँ से आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि रूल 5 चैप्टर 4 पार्ट एच ऑफ द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, rules and order पढ़ें। Rule 5 chapter part H, High Court rules and order. When an appeal is heard by a bench consisting of 2 judges and the judges composing the bench being equally divided in opinion as to the scene on a point, state that point on reference to another judge or judge and clause 26 of the letters patent, the case shall be heard on that point by one or more judges to be nominated by the Chief Justice. The Chief Justice may be such other judge और one other में भी सच चीफ जस्टिस एक नया कॉन्स्टिट्यूट करता है इन केस ऑफ डिसअप्रूवल। और जो है वो इसमें ये भी आता है फिर प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 378 CRPC में लिखा हुआ है। When any such case is heard before a bench of judges and such judges are equally divided in opinion, the case with their opinions therefore shall be laid before another judge, and such judge after such hearing as he thinks fit shall deliver the opinion, and the judgment or order shall follow such opinion. Such since the honorable judges did not formulate the issue wise difference of opinion after perusal of the 2 orders passed in the matter of bail dated 14/4/2021, the following points of dissent are found by us: whether the petition is entitled to the grant of post-arrest bail in ACN1 State vs. Mohammed Shahbaz Sharif, a reference under Section 18G read with Section 24B of the National Accountability 1999 pending in the Accountability Code number 2 Lahore on the allegation of assets beyond means under Section 9A 4, 5 and 12 of National Accountability Ordinance and Section 3 of the Anti-Money Laundering Act 2010 punishable under Section 10 of NAO 1999 and scheduled thereto for earning assets beyond known source of income to the petitioner to the extent of 7,328 million approximately through frictious telegraphic transfer FTT जो होती है TTN जिसको कहते हैं in the name of को
accused family member and Benami and others. Whether the petition is entitled to post as bail in the ACR number, whether the petition is entitled to this. अच्छा ये बेसिकली उन्होंने इश्यूज फ्रेम किए हैं फाउंड बाय अस. जो डाइसेंट हुआ था उस केस में वो ये 3-4 था मामला, तो उन्होंने इश्यूज फ्रेम कर दिए इसमें. अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाई कोर्ट में किस तरीके से उन्होंने ऑर्डर के अंदर ही अपने इश्यूज फ्रेम कर दिए हैं उस जजमेंट से निकाल के, कि जो जजेस थे वो डिसएग्री किन इश्यूज़ पे किया था. और ये जो डिसएग्री किया था इसके पीछे रीज़न क्या था. ये उन्होंने इश्यूज़ फ्रेम कर दिए, 4 गालबन इश्यूज़ हैं. फिर उनका बिफोर गिविंग एनी आवर ओपिनियन ऑन द अबव पॉइंट्स ऑफ डिसेंट इट इज़ अप्रोप्रिएट टू नरेट सम नेसेसरी फैक्ट्स थ्रू द कॉन्स्टिट्यूटिव पिटिशन सीक्स बेल आफ्टर अरेस्ट इन द अकाउंटेबिलिटी. Reference number bias of B's made under Section 18G read with Section 24B of NAO 1999 on the national on the allegation that on receipt of report from the Financial Monitoring Unit FMU Government of Pakistan regarding suspicious and currency transactions STR and CTR in bank accounts of Mia Mohammed Shahbaz Sharif slash petitioner and this other family members and business entities as owned by them, and also of establishing 9 industrial units, thereby requiring billions of rupees from the year 2008 till 20. During the inquiry, it was found that the assets of the petitioner and co-accused family members and Benamidas exponentially increased in value of 12 times from 1998 to 2019. 412 गुना इंक्रीज हो गया. सदाकत कितनी है ये तो हम अभी नहीं जज कर सकते. नैब ने इल्ज़ाम लगाया 412 गुना इंक्रीज हो 2018 में और रिप्रोड्यूस किया ऑर्डर में. Interested from 14.865 million to rupees 6112 million without having the corresponding sources of income. The inquiry was updated into investigation conducted in respect of the allegations of corruption and corrupt practices defined in Section 9A of NAO 1999, punishable under Section 10 of NAO 1999, read with Section 3-4 of Anti-Money Laundering Act AML 2010 and respective schedules thereto. During the investigation, it was revealed that petitioner remained a member of National Assembly from 1990 to 93, a member of Provincial Assembly, opposition leader Punjab 93 to 97. In the brief description, held the office of Chief Minister Punjab 1997-99 from 2008 to 2018. In the year 2018, the petitioner was elected as MNA and presently an opposition leader of National Assembly. Musamma Nusrat Shahbaz, his wife Muhammad Hamza Shahbaz Sharif and Suleiman Shahbaz Sharif, sons Mr. Rabia Imran Ali and Mrs. Javeria Ali, daughters of Musamma Tahmina Durrani, second wife of the petitioner, were also close relative of the Benamidas of the petitioner. Besides co-accused Nisar Ahmad, an employee of the Chief Minister's Secretariat, Ali Ahmad Khan, employee of the Chief Minister's Office, and Sayyid Muhammad Tahir Naqvi, an employee of the MS Ramzan Sugar Mills, and frontman of the petitioner, are also his Benamidas. And according to the allegations, accused Qasim Qayyum and unregistered money changer laundered the ये उसकी बीच में कासिम कयूम कह रहे हैं कि उसके थ्रू उन्होंने लॉन्डर किया disproportionate funds of the petitioner and his family members. Co-accused Rashid Karamat and Masroor Anwar, Muhammad Usman, Fazil Daad Abbasi and Muhammad Sharif Ahmed, the employee of the Sharif hai, the employee of the Sharif group, also committed the predicted offences of money laundering का जो उसने पूरा यहाँ पे उन्होंने चट्टा पट्टा दिया हुआ है. अच्छा उसमें होता है कि नैब ने इसको acceding to NAB, the petitioner had claimed the business and agriculture income where it could not be substantiated and was found fake. In other words, the total value of disproportionate assets and expenditures of the accused persons come to rupees 622 million, whereas the corresponding source of income from known source of income were insufficient, and that the present value of assets was rupees 7328 million because the value of the share in the companies increased to 1206 million. To explain the individual ownership, the details of the assets of the petitioner and his family members is reflecting from the following table. ये टेबल में उन्होंने तमाम नैब ने दिया हुआ है कौन कौन से. In his own name, Imam Shahbaz Sharif का 269 million है. In the name of wife Mr. Nusrat Shahbaz Sharif 299 million है. In the name of son Muhammad Hamza Shahbaz 533 million rupees. In the name of son Suleiman Shahbaz 2259. In the name of daughter Ms. Rabia Imran, fake TTs जो हैं 57. In the name of daughter Mrs. Javeria Ali 31. इनमें से वही डॉटर हैं जो केक्स एंड बेक्स में जिनका वाक्य भी आया था. नेम ऑफ डॉटर मिस जवेरिया इन द नेम ऑफ बेनामीदार्स 1884 मिलियन रुपीज़ डिस्प्रोपोर्शनेट. अच्छा डिस्पाइट ये डिटेल्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हेल्ड इन द नेम ऑफ एक्यूज पर्सन इनोमिनेटेड बिलो. इमूवेबल एसेट्स में ये भी आ जाता है कि
Details of हाउस नंबर 87 है, ब्लॉक एच में मॉल टाउन लाहौर में, यानी 10 कनाल नुसरत शहबाज शरीफ के नाम पे 128 मिलियन रुपीज़ हैं। निशात लॉज है डूंगा गली एबटाबाद में, इनके 9 कनाल 2.5 मरले का घर है 57 मिलियन का। उसका हाउस नंबर 87 ब्लॉक ए फेज़ 5 जो है DH लाहौर है भाई, 10 मरला। मिस तमीना दुरानी का है, प्लॉट नंबर 8 DH फेज़ 5 भाई, 10 मरला। ये भी है एक, ये भी तकरीबन 14 मिलियन बनता है, मतलब 2 करोड़ के करीब का। कॉटेज नंबर 20 विलन, ये है जो विस्परिंग पाइंस मौज़ा भाई, मौज़ा मखनियाल तमीना दुरानी साहब का, मोहम्मद हमजा शहबाज का है जी, हाउस नंबर जुडिशल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहौर भाई। अच्छा 40 जुडिशल 45 जुडिशल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउस लाहौर में 9 मरला। एंड ये मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ का है, ये भी जोहा टाउन में, इनका 2 कनाल 2 मरलाज। दैन एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ कुछ जो है ये फॉरेन अपार्टमेंट इन UK है। ये मूवेबल एसेट्स में अभी इसमें जनरलाइज लिखा हुआ कि 2 फॉरेन अपार्टमेंट्स UK में, कोई एड्रेस नहीं दिया। नेम ऑफ द कंपनी रमज़ान शुगर मिल, मूवेबल एसेट्स में दिया हुआ शेयर कितने हैं इनके। ये उन्होंने पूरे एसेट्स ये बना के, इसका चार्ट्स बना के अदालत में जमा कराए। डायरेक्टर्स लोन टू द कंपनीज बाय एक्यूज मोहम्मद हमजा शहबाज सलमान शहबाज शरीफ, उन्होंने जो लोन लिए हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। अब आगे जाके होता है, going to set reference property 96 small town Lahore was notified as CM camp office by the petitioner and therefore became the direct beneficiary of the said property. Rupees 4900 million were transferred by Mrs. Nusrat Shahbaz in the account of petitioner bearing number. This is maintained at Habib Bank Limited, New Muslim Town Branch, Lahore, to pay custom duty of Toyota Land Cruiser owned by the petitioner, and the amount of rupees 2.45 million was also transferred by her in the account of the co-accused Muhammad Hamza Shahbaz Sharif received 23 fake foreign remittance of rupees $18 million to purchase property in family. He also used the said fake remittance to purchase property 96 Mall Town Law for the benefit of petitioner. Likewise, Saleem Shahbaz एक को 111 फेक फॉरेन रेमिटेंसेज हैं जिनसे उन्होंने मॉल्टन का घर खरीदा। फैसल टाउन में इनका बैंक है, फिर एक वहाँ पे मुस्लिम टाउन में इनका बैंक है। The petitioner alleged to have established a Benami company, MS Good Naturing Trading Company, ये उनका details है factual सारी। अच्छा, उसमें the petitioner and the co-accused person alleged to have rupees 11 million from Mohammed Mushtaq of Al Rahman Garden, Al Rahman, rupees 2 million from Nasrullah Khan Baraich of Al Jalil Town। अच्छा, नसरुल्लाह खान वराइच जो है ऑफ अल जलील टाउन, वो भी हैं सदर। रुपीज़ 2.5 मिलियन ऑफ मोहम्मद इकबाल साजिद ऑफ ICU मोटर्स फ्रॉम राजा अली अकबर एंड गोरी टाउन। 7.5 मिलियन का मतलब है कोई 75 लाख फ्रॉम मलिक सैफुल मलूक खोखर। रुपीज़ 1 मिलियन फ्रॉम अल्ताफ़ हुसैन गोहर पब्लिशर्स। रुपीज़ 10 मिलियन फ्रॉम अरशद जवेद वराइच MPA सियालकोट। रुपीज़ 1 मिलियन फ्रॉम मोहम्मद अब्दुल्ला ब्रदर। लोगों ने काफ़ी बेनतहा इनको पैसे दिए हैं, उसकी डिटेल्स हैं। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फाइल विद नैब द फोरगोइंग फैक्ट्स। इसको मैंने थोड़ी सी इसके आर्गूमेंट से सुने थे, काफ़ी डिटेल में जाके इन्होंने बताया था। नैब की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं बड़ी डिटेल्ड होती हैं, आम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Therefore involved in the commission of offences of corruption, corrupt practices as defined in section 9A 4, 5 and 12 NAO 1936 the Anti-Money Laundering Act। AMLA इन्होंने बीच में डाल दिया है, NAO का भी इसमें सेक्शन लगाए हैं। Learned counsel the petitioner contended the petitioner was arrested on 28 9 20 and only 10 prosecution witnesses out total 110 prosecution witnesses could be recorded, and at present the learned trial court is vacant। जज की ट्रांसफर हो चुकी। प्लेस रिलायंस अपॉन PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 546 टाइटल जुल्फ़िकार अली वर्सेस द स्टेट PLD 209 टाइटल तलत इसहाक वर्सेस नेशनल अकाउंटेबिलिटी। तलत इसहाक का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले इस पर पूरी वीडियो भी की है, इसको हम पढ़ते रहते हैं ना। ऑर्डर पास्ट रेट पिटिशन नंबर 742520 हमजा शहबाज वर्सेस नैब ETC टू सपोर्ट देयर आर्गुमेंट्स ऑन द डिले इन conclusion of trial, submit that no tangible evidence is available against a petitioner, as none of the prosecution witness has ever stated that the money was sent or received by the petitioner directly on his own. The petitioner has declared his assets in the FBI at the relevant time, therefore he cannot be asked to dissolve other sources before the NAB. The place reliance upon PLE 2020 law, Mariam was chairman NAB and two other PLE Masoud Khan, other was chairman
नेशनल PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट टाइटल जस्टिस काजी फरीसा वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये उसको नूली बार बार इस केस को जो है वो करती है जस्टिस काजी फरीसा को. They also argued that the allegations of Benami transactions in respect of the co-accused person could not be proved on the basis that it lacked prerequisites, placed reliance upon PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 40 टाइटल में शाहिदा. इन्होंने बेइंतहा यहाँ पे टाइट रिलायंस प्लेस की है डिफरेंट पे बेनामी दर. मैं समझता हूँ कि एक अगर आप अच्छा जो ड्राफ्टेड केस होता है वो आप किसी भी टॉपिक पे अगर देख लें एक अच्छे जो है वो ड्राफ्टर का या अच्छे लॉयर का, तो यू कैन बिकम somehow good authority on the matter और आप काफ़ियों से बेहतर हो सकते हैं. तो इसके अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा उसमें उठा सकते हैं. मैंने अपने रजिस्टर में काफ़ी चीज़ें लिखनी है. खालिद बहुत ज़्यादा इसमें आपके लॉज लिखे हुए हैं. अच्छा, conversely, the learned prosecutor appearing on behalf of NAB submitted that the allegations against the petitioner is that of assets beyond means, that in response to various call-up notices, the accused persons did not appear. According to the allegation, the year 1988-90 total declared assets of the petitioner and his entire family members were of rupees 2.1 million, which increased to 14.8 million in 1998 through industrial business, which he inherited when he became the chief minister of Punjab. In 1996, assets started increasing in the year 2018. 1907 से 2018 में अमाउंटेड टू रुपीज़, पहले इनके एसेट्स थे 14.8 मिलियन, फिर 7328 मिलियन बन के 2018 में. इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो पूछते हैं किस बिजनेस में होती है. which were declared by him according to NAB 96 Molton, which is comprised of Tesla was in the name of Nusrat Shahbaz, wife of petitioner, purchased against 128 million. This is the place where the petitioner as the chief minister made his camp office from 2010 से 2018. The main emphasis is that all properties were made after 2005 through FTT and the money was received and not as a result of family settlement. Another property, Nab Law, just Dunga Gali Meri 9 was in the name of Nusrat Shahbaz, was valued rupees fla. LDA property institution colony belonged to Hamza Shahbaz, son of the petitioner. Another house Meri in Tasmara DH was gifted to Tamina Durrani against 38.5 million. वन प्रॉपर्टी इस्लामाबाद वैल्यू रुपीज़ 14. तमीना दुरानी को बहुत ज़्यादा इन्होंने अनायतें की हैं, पैसे दिए. आर्गूमेंट्स हर्ट फाइल पर यूज्ड आर फाइंडिंग्स ऑन द पॉइंट of dissent mentioned in clause B and C are as follows. According to paragraph T, the grounds of his bail petition has stated that he is 70 years old and has declared disc at L4-5 level with retro ये एक disease है, retrolisthesis. Cancer survivor is known. Case of tumor of appendix and status post high hemicolectomy since January 2003. ये medical terms हैं, आपको भी आनी चाहिए. When he underwent surgery, his yearly follow-up CT with anal gland cancer marker chromograin AB level are conducted to examine the possibility of recurrence of cancer, which were delayed because of the confinement in jail. The grant of bail on medical ground has been well explained by the apex court by giving guidance. The following judgment followed in grant of bail Mohammed Nawaz Sharif on medical grounds and purchase 2019 in repetition number 63511 of 2019 Mohammed Rashid versus the state and other मलिक मोहम्मद यूसुफुल्लाह खान. ये उन्होंने बताया कि मेडिकल ग्राउंड्स को अगर आपने पढ़ना है तो बड़ा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव केस है कि मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल किस तरह जो है वो ग्रांट होती है. यहाँ ये 3-4-5 केसेस हैं. ये SCMR भी बीच में आता है. इम्तियाज़ अहमद वर्सेस स्टेट का केस बहुत अच्छा मैंने पढ़ा था. ये दोबारा मैं एक दिन कभी कोशिश करता हूँ पढ़ूँ थ्रू स्पेशल प्रोसिक्यूटर ANF SCMR 1195. इसमें इन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आपको मेडिकल ग्राउंड से बेल कब मिलती है. in the none of them can be accepted as claimed. Rather, it is required to be investigated by the medical board comprising of the experts in the subject. Certain types of severity of ailment and the availability of essential treatment inside the jail. The file does not reflect any such report. Besides, the delay in conclusion of trial is ground agitated. Also in clause T, as the petitioner was arrested, 28 no-bees and as many as 110 witnesses have been cited. In volume record of 58 volume which were made part of the reference. There is no report from the learned court about the delay in trial and vacancy in the accountability. Needless to mention here, the presence of a decision made by the authorities that the vacant account will be filled up soon. We are not persuaded that is a case of incarceration since statutory ground is not available to a person under NAO 9. Therefore, by reference, by referring the case of the brother of the petitioner named Mia Mohammed Nawaz Sharif, we have the considered unanimous opinion that the case petitioner for the grant of post bail on medical ground as well as on delay in conclusion of trial is not made out. Therefore,
we side with learned brother Justice Javed Gural on point B and C. अच्छा, ये जो इन्होंने ऊपर पॉइंट्स दिए थे ना कि जो हम लोगों को बीच में इशू आता रहा है, वो उसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो जैसे गुराल के साथ बी और सी पॉइंट पे होते हैं. बी और सी पॉइंट इसमें अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कि बी और सी पॉइंट है क्या, वो जो इन्होंने हाईलाइट भी किया था ये वाला है जी. entitled to the post arrest bail A B C, ये इन्होंने इशू जो फ्रेम किए थे A B C, B C में उनके साथ है whether the person entitled to post arrest bail in ACR नंबर, ये वाला उनका B C है. अब 17 पेज पे हम चले जाते हैं. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर ठीक है. इन्होंने वहाँ पे जस्टिस गुराल साहब के साथ इन्होंने साइड किया बी और सी की हद तक. As far as the point of descent in clause A for the grant of bail on merits concerned, it may be acknowledged that we have been enlightened by the valuable assistance rendered by the learned counsel for the petitioner as well as the learned prosecutor for NAB, and now well understand that the prosecution case is simply that petitioner, being the public office holder, has amassed money and has built up the assets in the name of his close relative and dependents as Benami through fraudulent FETs where the petitioner was the main beneficiary. To further and analyze the issue, it is relevant to refer to dictionary meaning of the word corruption, which is an act. अच्छा, इसमें corruption को define भी किया हुआ है, which is an act done with an intent to give some advantage and consistent with the official duty and rights of the other. And such act of official and fiduciary persons who maliciously or wrongly use the situation to procure some benefit for himself or others contrary to his duty. The word corrupt practices are succession acts of a similar kind of spoiled, tainted, vitiated, depraved, debased, morally degenerated acts. A Benami transaction defined in Section 41 of Transfer Properties Act 1882, which is produced as under transfer of ostensible property, where with the consent express or implied of the person's interested in immovable property, a person is the ostensible owner of such property and transfer the same for consideration. The transfer shall not be voidable on the grounds that the transferor was not authorized to make it. That the transferee, after taking the reasonable care to ascertain that a transferor had power to make the transfer, had acted in good faith. In such like situations, to prove Benami transaction, certain facts are to be proved, which are discussed in the case reported as Deen Mohammad Wagan versus Rashida Khatun. थ्रू लीगल एयर्स 2002 CLC का केस इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए. मैंने भी नहीं पढ़ा, अभी मैं भी पढ़ूंगा. कि बर्डन इज ऑलवेज अपॉन अ पर्सन हु क्लेम्स द बेनामी ट्रांजेक्शन इज हेल्ड इन. अच्छा, प्रूव. अच्छा, इसको इसमें जो प्रूव किया हो ना बेनामी ट्रांजेक्शन्स के लिए, उन्होंने पहले साइट किया ट्रांसफर प्रॉपर्टीज एक्ट पे, नीचे उन्होंने उसकी साइटेशन दी कि इसकी इंग्रेडिएंट्स यहाँ से पूरे करें. बर्डन इज ऑलवेज अपॉन अ पर्सन हु क्लेम्स द बेनामी ट्रांजेक्शन इज हेल्ड इन मेसर्स शालीमार लिमिटेड वर्सेस कराची वर्सेस राशिदुद्दीन सिद्दीकी, स्टार्टिंग फ्रॉम जजमेंट गिवन Sri was Commissioner of Income Tax Madras. It has held that in order to prove a Benami transaction, source of income, custody of title, document, possession of property, motive of the transaction, to prove this, the evidence should be confidence inspiring. To establish a Benami, that it must be shown the person is financially dependent upon his family member for his maintenance support, and that he is the ostensible owner of the property and the ownership of his family member. This is the most easy meaning trace from the commendation learning. Likewise, the Benami's status and responsibility have been explained in Jane William versus Abdul Hamid Mian 1994 CLC 1437. अच्छा, मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि 1994 CLC 1437 का केस बहुत इंपॉर्टेंट है. बेनामी दार में जितनी साइटेशंस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन सबको अगर आप जगह पे लिख के लॉ साइट पे जाके देखें तो आपको एक ख़जाना मिलेगा जो नैब और बेनामी प्रॉपर्टीज़ के केसेस से लिंक्ड आप जो चीज़ें देख सकते हैं. इन विच इट वाज हेल्ड दैट वेयर एनी प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड by a husband in the name of his wife, the presumption was that the beneficiary was Benami, and if he claimed it her own by allegation that husband made a gift, burden would lie upon him to establish. In order to prove their case, the prosecution had given the details of the assets and inadequate resources disclosed by the petitioner. Family member utilized for the assets. Admittedly, अच्छा ये भी हो गया. In the investigation report of NAB, it is stated
that the valuable resources to purchaser or build up such assets could not be provided by the petitioner despite various notices. In the table mentioned in the paragraph number 3, the allegation is that the petitioner has assets of 269 million in his name, but its proof was not enclosed with the reference. No investigation was conducted to dig out the source of income of the petitioner. The वो कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम जो पटिशनर की है वो भी अभी टेक आउट नहीं की. द अदर बेनिफिशरीज वर आइदर हमजा शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज शरीफ. Likewise, in paragraph number 4, this order the NAB case was narrated, according to which the amount of rupees 409 million was given by Nusrat Shahbaz to the petitioner to pay the custom duty of vehicle, and another amount of rupees 245 million. The 2.45 million was also transferred in his account. However, these assets may have been frozen by NAB, hence should have been secured from the further alienation. Besides, direct remittances in the account of the petitioner are missing. We are afraid that half-hearted attempt by the NAB will not absolve them from the responsibility to prove the case against the petitioner, as the presumption of innocence always lies in the favor of the accused person, and the onus shifts only after initial discharge of burden by the prosecution, as held in Ashfaq Yarwali's case, reported PL 2001, Supreme Court 607, page number. Interestingly, the NAB has categorically admitted before us that the petitioner is not alleged to have received any kickbacks or any such ill-gotten money in return to a favor of extended to someone to build up the assets in the name of his family. These detailed explanations were to be provided by the co-accused person, the sons, the daughters, and the wives of the petitioner. But since we are dealing with the case of petitioner, perhaps this does not appear to be his sole responsibility. वो कहते हैं कि पहली बात तो ये कि जो हाई कोर्ट कहता है कि जो उनके 20 बच्चों के नाम की प्रॉपर्टी है वो अभी तक हमारे पास अंडर क्वेश्चन नहीं है. अभी हम पटिशनर की बात करें, पटिशनर इज शहबाज शरीफ, एक CM ऑफ पंजाब. वो कहते हैं कि नैब ने एडमिट कर लिया कि किकबैक नहीं लिया इन्होंने. किकबैक ना लेने की बात उन्होंने यहाँ पे एडमिट कर ली गई है, लेकिन वो कहते हैं कि आपने अभी हाफ हार्टेड इन्वेस्टिगेशन की है नैब को. ये जो पहले भी हमारे कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन नैब की काफ़ी वीक होती है, और हाफ हार्टेड अटैम्प्ट्स वो जो बार बार कहते हैं उन हाफ हार्टेड अटैम्प्ट्स की वजह से नुकसान होता है, कोर्ट्स में भी इंसाफ नहीं मिल पाता. उसी को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप इसको मज़ीद इस पर रिसर्च करें, और अभी आप कुछ प्रूव नहीं कर सके, आपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता सके. अभी आप सिर्फ उनकी एमैलगमेशन आपने पॉइंट आउट की है, ये नहीं बताया कि एमैलगमेशन की सोर्स क्या है. In the case of Brigadier R. Imtiaz Ahmed, the prosecution produced the income tax and wealth tax documents of the accused therein, but failed to find his any other source of income, and the ingredients of Benami transaction of wife could not be established. Reliance is placed upon Brigadier R. Imtiaz Ahmed versus the state. PL 2017 order dated 26/6/2019 passed by criminal appeal number 480, 481 and 482 of 2015 titled National Accountability Bureau versus Brigadier retired Imtiaz judgment. Hence, it is now law that transactions in the income tax return carry the presumptions of ट्रूथफुलनेस. अच्छा, लॉ ये बन चुका हुआ है, बड़े इंटरेस्टिंग है कि आपने इसको अथॉरिटी ये बन जाती है कि जो प्रिजम्पशन है लॉ दैट ट्रांजेक्शन इन द इनकम टैक्स रिटर्न कैरीज द प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथफुलनेस. जो भी आप इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न शो करते हैं वो आपकी ट्रूथफुलनेस की ऑटोमेटिकली गारंटी दे देती है. जैसे होता है ना इनोसेंट सेंट्रल प्रूवन गिल्टी, उस तरह लीगल लैंग्वेज में हम वो बता रहे हैं कि जो आप टैक्स में अपने डिक्लेयर करते हैं दैट इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रूथफुल अनलेस कि उसके कॉन्ट्री एविडेंस ना है. तो जो बर्डन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है प्रोसिक्यूशन पे टू रिबट द प्रिजम्पशन. आपको प्रिजम्पशन और रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन का जो क्राइटेरिया है वो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए ब्लैक लॉ डिक्शनरीज में जाके. इन अब्दुल अलीम खान वर्सेस द स्टेट, ये जो अलीम खान का फेमस केस है डिसाइडेड ऑन 15/5/2019. द बेल ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट ऑल्सो ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टीज वर डिक्लेयर्ड इन द income tax return. Even the Honorable Judge Aziz Javi Garal, developing a difference of opinion in the present case, has already granted bail in this Mazhar Hussain Arif versus National Accountability, while referring to the source of money declared declared in W with petition number Mazhar Hussain Asif versus, while referring to the source of money in the tax return. Likewise, Imran Ahmad Khan Niazi versus Mia Mohammed Nawaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, member National Accountability, Prime Minister House Islamabad, and 9 others. PLD 2017 Supreme Court में it was held that a married daughter Maryam Nawaz, though living in a joint family in different houses, is same compound capable of surviving of her own, cannot be called a dependent of father. The living together therefore is not a proof of dependability. उनका डिपेंडेबिलिटी सिर्फ साथ रहने पे नहीं होती, ये सेटल लॉ है 2017 सुप्रीम कोर्ट 265 का. The case of the prosecution is also that being a public office holder, the highest standard of morality is required to be exhibited, since they
play a role model for the general public, and this corrupt person is giving the public seat of responsibility. The public conference is a democratic system, is bound to shatter. We fully subscribe to the argument the public office holder must command the respect, honor, and dignity. In short, they should be 100% Mr. Clean. This is, of course, a hallmark of democracy, that whenever any public figure facing any such he is bound to suffer politically, which is a defeat of its own kind. But here we are conscious of our limitations, as we deal with the cases only in accordance with law and not otherwise. At times we are also guided by supported by the principle of morality, but when it comes to the question of liberty of an individual, we are bound to take into account the basic principle under which bail can be granted or refused. We cannot, however, keep our eyes closed to a principle for the grant of post-arrest bail, which is whether the case of petitioner calls for further inquiry into his guilt. In the absence of any property purchased or owned, or the personal name of the petitioner, in the absence of direct proof of that his family members were his dependent, पहले प्रूव करना पड़ेगा कि डिपेंडेंसी है फैमिली की, वो नहीं अभी तक हुई, तो इस वाइस वर्सा. In the absence of a direct proof that money came through FTTs in his account as some crime proceed or money laundering, we cannot accept the prosecution case as a gospel truth. We are also mindful of the fact that we are deciding a bail matter and not the appeal, so as to appraise the entire evidence which is yet to be produced. The prosecution has yet to establish its case before the trial court on the basis of 110 witnesses. There is a possibility the prisoner may be convicted, and equal is the chance that he may be acquitted. It is event of acquittal, the retribution of the time he spent behind the bar will not be possible. Reliance is placed upon the hallmark judgment Tariq Bashir versus the state. 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 वो कहते हैं कि जी अभी 110 जो विटनेसेस हैं वो नैब के कोर्ट्स में आपने उसको ट्रायल में लेके जाने हैं, वो आप एक दफ़ा लेके जाएंगे, उसके बाद आप वहाँ पे हो सकता है क्विट हो जाए, हो सकता है वो कॉन्विक्ट हो जाए. इन आइदर केस जो वो कह रहे हैं कि प्रिजम्पशन जो है वो उनकी फेवर में इस तरह जाती है कि अगर वो एक्विट हो जाते हैं तो उनका क्या कसूर है कि इतनी देर से लेकर वो अब तक जेल में बैठे हैं, विच इज़ समहाउ ऑब्वियसली equitable. Acha, Tariq Bashir versus 5 other versus the state, while placing reliance upon Ghani or Rahman versus National Accountability Bureau, another PLD 2011, Khalid Aziz versus the state 2011 SCMR. अच्छा, ये सारी उन्होंने साइट की है कोर्ट ने. वी हैव रीच द कंक्लूजन दैट द केस ऑफ द पिटिशनर फॉर द ग्रांट ऑफ पोस्ट और बेल इज मेड आउट. वो कहना पेस्ट आउट फर्दर इंक्वायरी तक सिर्फ हमने डिस्कशन करनी है, मेरिट्स नहीं है, अपील नहीं है, तो फर्दर इंक्वायरी को उन्होंने कहा है कि वो मेड आउट होता है. बिसाइड द डिफरेंस, अभी 2-3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बीच में आते हैं कि बिसाइड द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन जजेस ऑन बेल मैटर वुड क्लियरली शो द एक्जिस्टेंस ऑफ रीजनेबल ग्राउंड टू कनेक्ट द पिटिशनर विद द क्राइम एज डाउटफुल, which would entitle him to the benefit of doubt, a factor essential for the grant of bail. This view was given in paragraph 10 of the judgment of the case of Tariq Bashir, reported as PLD 1990 Supreme Court 34. On the same point, leave to appeal was granted by the Supreme Court in Mohammed Shakil versus Shaki Zaman and other 1990 SCMR, and later this case was disposed of without recalling the bail granting order of 28/2/2000 while deciding criminal appeal 192 of 9. This view was lastly followed by a full bench of Karachi High Court in Muzammil Niazi and other versus the state, and his law, which we also follow. मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ. Besides the difference of opinion between judges on bail matter would clearly show the existence of reasonable ground to connect the petitioner with the crime. वो कह रहे हैं कनेक्टिविटी नहीं है भैया. Yes to doubtful, which would entitle him to the benefit of doubt. अब benefit of, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए benefit of doubt मिलता है शहबाज शरीफ को, फैक्टर essential for the grant of bail. benefit of doubt अगर आ जाए तो आपकी obviously further inquiry का केस बनता है और आपको बेल मिल जाती है, जैसे मैंने आपको पीछे FIA वाले केस में बताया था. This view was given paragraph 10 of judgment of the case of Tariq Bashir. On the same point, leave to appeal was granted by the Supreme Court in Muhammad, and later this case was disposed without recalling the bail granting order on 28/8. वो कह रहे हैं कि ये भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया हुआ कि जब कनेक्टिविटी ना हो तो आपको बेल मिल जाती है, while deciding criminal appeal number 10 Muzammil Niazi and versus state, and is the law which we also follow. For foregoing reasons, we have found ourselves in agreement with our learned brother Sardar Muhammad Sarfraz Dogar on the point. वो कहते हैं गुराल ने कुछ पॉइंट्स में किए हैं गुराल साहब ने, लेकिन जस्टिस डोगर साहब से हम इसमें एग्री करते हैं. पॉइंट ए, एंड देयर बाय एडमिट द पिटिशन टू पोस्ट रेस्ट बेल सब्जेक्ट टू हिज फर्निशिंग बेल बॉन्ड ऑफ ₹50,000 जो कि 5 लाख जो है वो बनते हैं, विद 2 श्योरिटीज़ ईच इन द लाइक अमाउंट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लर्नड ट्रायल कोर्ट. अली बाकिर नशवी साहब ने ये ऑर्डर जो है लिखा है. इसमें बैंक के जो इसको हेड कर रहे थे बेंच के मेंबर सईद शहबाज अली रिजवी एंड जस्टिस आलिया नीलम साहिबा
थी और ये अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है जज, और अब उसमें ए पॉइंट से उन्होंने एग्री किया जस्टिस डोगर साहब के। अब हम ए पॉइंट भी एक दफ़ा मैं फिर देख लेता हूँ जिसमें आपको बी और सी बताएं। वेदर द petitioner is entitled to the grant of post arrest bail in ACR number state versus Mia Mohammed Shahbaz by reference under section read with section 24B of the National Accountability Ordinance pending in the Accountability Court number 2 Lahore allegation of assets beyond mean act फला फला। वो कहते हैं कि ए में उन्होंने कहा कि हम डोगर साहब से करते हैं, उन्होंने पोस्ट अरेस्ट बेल इसमें उनको दे दी, मतलब ग्रांट हो गई 22/4/2021 को, जिसकी बेसिस पे जाने वाला पूरा एपिसोड हुआ है और तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये केस एक बहुत अच्छा लैंडमार्क केस है। अगर आप इसको पढ़ लें तो ये एक किस्म का आपको समराइज़ करता है द एंटायर लॉ ऑन बेनामी ट्रांजेक्शंस और आपकी जो कनेक्टिविटी है विद बेनामी ट्रांजेक्शंस, क्राइम की इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, टैक्स लॉ का बीच में डिस्कर आता है, 5, 6, 8 इस तरह की अथॉरिटीज़ निकलती हैं डिफरेंट नोयत की, आप डिफरेंट मामला में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुकदमों में। और ये इनका बड़ा एक अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ऑर्डर अच्छा है या नहीं, पॉलिटिकली आई एम स्पीकिंग लीगली ओनली, कि लीगली दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड केस टू रीड और अब से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू।